हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुरानी काफियाँ पड़ी थी ये वाले, इसके बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। ये वाले इकोनॉमिक्स 15 सिंपल क्वेश्चन ऑफ पेपर इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज हम इंग्लिश पढ़ना है, ये हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। हमको इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश रीडिंग करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, है ना। तो ये हरियंत की हरियंत इंग्लिश सीखो, इंग्लिश पढ़ो। तो पार्ट ए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन सुन लो। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। What is the economy? Central problem of an economy: what, how, and for whom to produce. Concept of production: possibility and opportunity cost. ठीक है। सेकेंड है कंज्यूमर्स एंड डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर डिमांड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, conditions of consumers using marginal utility analysis, curve analysis of consumer, the consumer budget set and budget line, preference of consumer to the consumer, curve map and condition of consumers demand, market demand, determinants of demand schedule, demand curve and its slope, movement along and shift in the demand curve, price elasticity of demand, factor affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, percentage curve method। ठीक है। ये अब producer behavior and supply. Meaning of producer function: short run and long run. Total product, average product and marginal product return to a factor. Cost: short run cost, total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost. Meaning and their relationship: revenue, total average revenue, marginal revenue, meaning and their relationship. Producer meaning and condition in term of marginal revenue, marginal cost, supply, market supply, determinants of supply schedule and curve and its slope, movement along and shift in supply curve, price elasticity of supply, measurement of price elasticity of supply, percentage change method। ठीक है। यूनिट 4, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेंट्स। परफेक्ट कंपटीशन: फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अदर मार्केट फॉर्म्स: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, oligopoly and their meaning of features, simple application of demand and supply, price selling, price flow। ठीक है, आपको हॉटस्पॉट भी दे देते हैं हम। ठीक है। फिर पार्ट बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत दिनों बाद 12th के बाद आज पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है।
कोई लेना देना नहीं मिल, फिर भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट। कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड depreciation, circular flow of income, two sector model, method of calculating national income, value added of product method, expenditure method, income method, aggregates related to national income, gross national product GNP and net national product NNP, gross and net domestic product GDP and NDP, at a market price, at a factor cost, real and nominal GDP and welfare. GDP means gross domestic product, NNP मतलब net national product, NDP net domestic product और GNP gross national product। ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, money in banking, money meaning and supply of money, currency held by a public and demand, net demand, deposit held by commercial bank, money creation by the commercial banking system, central bank and its function, example की तरह, example to the example of the Reserve Bank of India, bank of issue, government bank, banker and bank, control of credit through bank rates, CRR, SLR, repo rates and reserve repo rates, open market operation margin requirements, determination of income and employment, aggregate demand and its components, propensity to consume and propensity to save, average and marginal short run, equilibrium, outs investment multipliers and its mechanism, meaning of full employment and involuntary unemployment, problem of excess demand and deficient demand, measure to correct them, change in government spending, tax and money supply। बहुत दिनों बाद इंग्लिश पढ़ी भैया। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, measure of government deficit, revenue deficit, primary deficit, their meaning, balance of payment account, meaning and component, balance of payment deficit, meaning, foreign exchange rate, meaning is fixed and flexible rates of managed floating, determination of exchange rate of in a free market, prescribed book, a question पेपर डिज़ाइन इकोनॉमिक्स। ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर, अ पर्सन हु कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज wants is called consumer. Utility, the want satisfaction power of a good is called utility. Cardinal approach of utility, it's referred to the measurement of utility in terms of standard numerical like 1, 2, 3, etc. Under this approach, the unit of measurement of utility is utils. Ordinal approach of utility, it's referred to the measurement of utility in terms of psychological satisfaction of consuming one goods in comparison to other. Total utility, it is the sum of marginal utility mu obtained from the consumption of difference utility of a commodity। ठीक है। marginal utility is derived from the consumption of an additional utility unit of a commodity, its term to the marginal utility। ठीक है। law of diminishing marginal utility, this is law state
that are the more and more standard units of a commodity and consume. The marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing. It is referred to as a fundamental psychological law. Thank you so much watching my video, and like, share and subscribe to my video. Thank you.